हाँ। But I think this time, what you call, they have decided कि it's now or never. We are But live. I think this time, what you call, they have decided कि it's now or never. Are we live? Yeah, live. I think this time, what you call, they have decided कि it's now or never. Are we live? Yeah, live. I think this time, what you call, they have decided कि Are you on YouTube as well right now? Are we live? Yeah, live. I think this Yeah. One second. time, what you call, they have decided कि Okay. How do we turn that off? Yeah, no idea. Let's see. Theater mode, full screen, settings, live chat. Okay. Am I visible? I'm not visible, by the way. No, you are visible. Oh yeah, now I'm visible. Yes, I see myself. Let me go from my phone and let's see what's happening. Try to like. Okay. Am I visible? I'm not visible, by the way. You are visible, No, actually. visible. Oh yeah, now I'm visible. Yes, I see myself. Let me go from my phone and let's see what's happening. Try to like. Am I visible? I'm not visible, by the way. You By are the way, visible. you can just mute the voice of Yes, on I that see. particular Let me go thing. from my phone and let's see what's happening. Okay, I think it's good. Try to like. Think No, we but got I'm it. no, think we I'm got it. saying turn off the volume on your YouTube. हाँ वो मैं करता हूँ लेकिन वो मेरे फोन पे है मैं चेक कर रहा हूँ कि काम कर रहा है या नहीं. It's working, but you have to set it to like multiple speakers or something like that so that we both are visible. Okay, let's see. Weird. Okay. Mic. Okay, let's see. What do we have? Hello? But yeah, I don't know how to make this into two people's screen. Maybe. Okay. by the way, जो if बंदा बात करता है उसी के आता है ना. let me see. I think that's what happens. If that is the case, we can just honestly, if that is how it happens, then we can just record like this, and we don't need an editor except to put like वो जो introduction का वो है ना. हाँ नहीं मतलब ये सही लग रहा है मुझे तो नजर तो आ रहा है. Yeah, I can Let's see see what I myself put as up the well. But board. what I'm saying is, we can just record like this in future rather than going. How do you say? अच्छा चलो अब डिस्कशन पे आते हैं ना. Yeah, sure. ओके. मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ. हाँ. ओके. अस्सलाम वालेकुम कमरान. सहरी कैसी रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इट्स बीन एन आवर. मुझे फिर रोजे इस दफा बहुत छोटे हैं यार ऑनेस्टली. स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं. हाँ ये बात तो है ये बात तो है. Is यहाँ is it पे the तो same? Is it the same there? yeah I mean it's like a 12 and a half hour वो सब. Yeah, it's same here, man. 12-13 घंटे It में हो feels जाता very है. it feels very short. मतलब कि कैसे थे, you sleep around 6:30, ठीक है, and then you wake up around 10, 11 ish, and साथ में आपने थोड़ी देर बाद कैसे थे अपने by 11 sorry 12 1 you have to pray Asr, sorry Zohar, and then Asr, and immediately there's no time for anything. हम्म. Like and then हाँ. Tarawih, so कोई मतलब time नहीं है आपके पास मुझे कि तो कोई. मुझे तिलावत का टाइम नहीं मिल रहा ठीक से. क्योंकि हम्म. एक तो काम इतना ज़्यादा है. दूसरा मतलब क्योंकि जनरली मैं काफ़ी मतलब मेरी कोशिश होती है काफ़ी ज़्यादा तिलावत करने की. इस दफ़ा भी कोशिश थी. लेकिन एटलीस्ट अभी तक अपने गोल से मैं काफ़ी पीछे पीछे रहा है. है. हाँ बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरावी चल रही है. तुम लोगों की तरावी कैसे है?
Yeah, it's fine, man. It's fine. Do हाँ। you want to discuss like whether it's art or beast? आह, तुम बताओ, तुम लोगों के यहाँ क्या है? No, no. Generally it's fine, man. I what you call. I've been to 3 to 4 different mosques because of like where I've been. कभी मैं सियालकोट होता हूँ, कभी मैं इधर होता हूँ, तो तो that's अब why. बताए कि क्या रसूलुल्लाह ने कभी 20 रकात तरावी पढ़ाई? ऐसा You know the constant किस कहते हैं वो 8, 10, 20। but if that's I've never heard that's art या 10 भी 12 है ना, बजे. 10 भी है, हाँ 10 भी है, हदीस है। अच्छा, I don't know. Man, I फेमस literally द फेमस बैटल इज 8 वर्सेस 20। हाँ 8 versus लेकिन 20. एक हदीस But 10 की भी है। असल में 13 की है, लेकिन 3 तो वितर होती है, तो 10 रकात तरावी। What can we do, man? This is the start of the ummah. लेकिन बाकी सब मतलब माशाल्लाह। तो स्टेटस अपडेट, ओके। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से शुरू करते हैं क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकली पहले आता है। तो मुझे ऑनेस्टली लाइक मैंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को काफ़ी लाइक इंस्टाग्राम न्यूज़ के अलावा मेरे पास लाइक कुछ भी नहीं देखा मैंने। सो व्हाट्स हैपनिंग? yeah, so initially everybody knows what's been happening for the last 3 4 years. And वही बात है कि you are passing blame on this side and that side, right? हम्म। My personal कैसे the opinion is कि we are a nation of hypocrites. ठीक है? हम्म। वो कहते हैं ना, it takes a special kind of skill to snatch a defeat from the jaw of victory. हम्म। तो वो पाकिस्तानियों ने किया है इन अफगानिस्तान. ठीक हम्म। है? 40 साल पहले हम लोगों ने लोगों को ट्रेन किया, अपने लोग हैं, ठीक है? हम्म। एंड फिर उसके बाद हुआ ये है कि अब जो है ना, दे आर आर एनिमी नंबर वन ऑन द ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर. उसकी हम्म। वजह क्या है? क्योंकि देखो यार, फॉर ए स्टेट टू फंक्शन प्रॉपरली, राइट, देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट टू अ कॉज. ठीक है? यू कैन एग्री हम्म। टू द कॉज, यू कैन डिसएग्री टू द कॉज, बट एटलीस्ट देयर हैज टू बी सम, as on a state level there has to be some semblance of honesty about it. आप कैसे कहते हैं, these people जो टीटीपी वाले हैं, ठीक है, हम्म। sure you can call them Khawarij, you can call them Hindustan. The issue is that these are all your people, you whether you like it, whether you don't like it, and that's a matter of fact. ठीक है? हम्म। अब हुआ ये है कि कैसे कहते हैं 2022 में, आफ्टर कैसे थे तालिबान केम बैक इन 21, देयर वाज दिस अप्रोच फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट कि हम लोग कैसे थे रीसेटल करेंगे और इनको कैसे थे विल डील विद देम इन अ मोर subtle way. At least that was the understanding. It didn't work out because immediately afterwards, 2022 में there was a regime change, हम्म। जो अब तो undeniable हो गया ना कि there was a regime change. तो हम्म। उसके बाद जो है we allowed for, and this is my way of understanding and looking at this, we allowed for कैसे कहते हैं, the suspicious timing was कि Amin al-Zawahiri got assassinated immediately afterwards. ठीक है? And I हम्म। think immediately after that, you see a surge in कैसे कहते हैं terrorist activities across the border. ठीक है? हम्म। अब टीटीपी वाले सॉरी, उसके बाद कैसे थे, हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लोगों को इनके साथ जॉइंट ऑपरेशन करने हैं और इनको हम लोगों ने खत्म करना है टीटीपी को. ठीक है? दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग. द प्रॉब्लम फॉर तालिबान इज कि दीज आर द पीपल दैट दे हैव फॉट फॉर विद सिंस 1979. ठीक है? हम्म। So you cannot just accept कि कैसे थे Sirajul Haqqani or all these people within the कैसे थे Kabul या Kandahar will just give up कि यार हाँ, अब जिनके साथ हम लोगों ने पिछले 40-50 साल से लड़ाई के साथ मिलकर हम लोगों ने दो सुपर पावर्स के साथ जंग लड़ी है, वो हम लोग will hand it over to Pakistan. So they हम्म। are saying that this is not possible. And also you have to understand it from the perspective of the Taliban, Afghan Taliban. They are stuck between a hard place and a rock. ठीक है? वही बात है कि do if you're damned, don't if you're damned. तो दे आर हम्म। स्टक बिटवीन दैट सिचुएशन. एक साइड से पाकिस्तान है, दूसरी साइड से इफ दे कैसे कहते हैं डिसाइड टू गो अगेंस्ट तरीके तालिबान. टीटीपी। हाँ, टीटीपी. तो होगा ये कि कैसे कहते हैं टीटीपी विल आल्सो टर्न अप देयर आर्म्स अगेंस्ट अफगानिस्तान, राइट? बिकॉज जो अभी सुसाइड बॉम्बिंग इधर हो रही है, ठीक है, या सुसाइड वो बॉम्बिंग वहां पे होने लगेगी। वो या वहां पे होगी, क्योंकि पिछले एक साल में वी हैव हैड अबाउट 1200 कैसे थे डेथ्स आर्म्ड पर्सनल. या दिस इज द रिकॉर्ड इन पाकिस्तानी हिस्ट्री. से पहले आई थिंक 2008 या 2009 में 900 बंदे कैसे थे आर्म्ड पर्सनल वेयर मार्टर्ड. हम्म। तो अब बचता है, और पिछले साल एक में कैसे थे अफगानिस्तान में 50-60 लोग मारे गए.
Afghanistan does not have the state infrastructure to handle that kind of blowback. Mhm. उनकी Mhm. कैसे थे, state leadership is not that unified because there are certain people within that state even today that are pro Pakistan, the other that are anti Pakistan. और वो तो इसको इसका तो तुम्हें भी पता है कि why that case exist, वो dichotomy क्यों Mhm. exist करती है अफगानिस्तान में ना. Mhm. तो सो पाकिस्तान इज बीन सेइंग कि हम लोग पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं इनके साथ अच्छे तरीके से करने के लिए, अच्छे तरीके से करने के लिए. बट यार फंडामेंटल इशू एट हैंड इज कि बोथ ऑफ द, बिकॉज अब हम मेन स्ट्रीम कह सकते हैं लैंग्वेज में रिजीम्स का वर्ड बहुत आम हो गया रादर देन गवर्नमेंट्स. तो आई Mhm. यूज द बोथ ऑफ द रिजीम्स वेदर इज तालिबान और वेदर इज द, हाउ वुड आई यूज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, द जनरल्स इन पाकिस्तान. तुम्हें पॉलिटिकली करेक्ट होना है अब. हाँ, तो वेदर Okay. इज देम दे बोथ नीड ईच अदर, ठीक है. Mhm. एंड द पॉइंट बीइंग कि कैसे कहते हैं यार, इट इज मच सेफर टू कैसे कहते हैं हैव लाइक 10 15 13 40 50 दैट्स, वो बक्से वो लोग उठा लेंगे. इट इज मोर डिफिकल्ट टू कैसे कहते हैं deal with the systematic structural issue as at hand. देखो KP पे you are from the region, you can tell this much better. You have structural issues over there. These are not के कैसे थे issues that are कि यार हम लोग अगर टेररिस्ट खत्म कर देंगे तो सारा कुछ एवरीथिंग विल बी गुड. टू कैसे थे ब्रिंग अबाउट दैट चेंज यू नीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. उससे क्या होता है, स्टेट की रीट नहीं है, ठीक है, पहली बात. Mhm. फाटा वाले ओ सॉरी वजीरिस्तान वाले रीजन में कैसे थे काफी ज्यादा जो कैसे थे पश्तून बेल्ट है उसमें आपकी कैसे थे स्टेट रीट नहीं है. बलूचिस्तान में भी यही इशू है. Mhm. आपने लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज किया हुआ है. पीपल आर एब्सोल्युटली होपलेस, which is why they are कैसे push towards a बहुत simplistic narrative है ना, which is why Mhm. they feel कि कैसे we need to do something about the living conditions in Pakistan, we need to bring about a change, and that is what gives rise to ethnic nationalism, all this kind of. But हमारी state is not willing to reform itself, ठीक है, and they don't have any कैसे थे नीड टू रिफॉर्म इटसेल्फ. तो फिर उसके बीच में पाकिस्तान ने कैसे थे कुछ हमले किए अफगानिस्तान पे, ठीक है. दिस वाज ऑन 21 और 22 फरवरी. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जी टीटीपी के कैसे कहते हैं दहशतगर्दों के अड्डे तबाह कर दिए और ये सब कुछ, ठीक है. फिर 26 को अफगानिस्तान ने कहा कि वी नीड टू अटैक एंड रिटेलिएट. तो उसके बाद जो है ना पाकिस्तान ने कहा कि वी विल रिटेलिएट बैक. एंड अब हमने काबुल और कंदहार में भी कैसे थे यार, एंड ऑल दिस इज लाइक फाइन, ठीक है, यू अटैक दे अटैक. दैट्स the kind of racist and absolute cringe fest of content that has been pushed out by our, Mhm. or to be very honest, and I'll use the things that have to be said by our Punjab की government. Mhm. Absolute racism, ठीक है, Mhm. of the highest order. Like क्या cringe content है यार. मतलब टैक्स पेयर का मनी इस चीज पे जाया हो रहा है कि हमने कहना है कि जी तंदूर वाले ना लगाओ ये. आई Yeah. मीन this is the Yeah. level of sophistication that taxpayer money is being wasted for. Yeah. इतना You ज्यादा know, वो है. मेरी मेरी अम्मा वो एक बात, घर वालों में हमेशा लाइक लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती रहती है ना. तो एक चीज़ जो काफ़ी होती है, मेरी अम्मा लाइक काफ़ी दफ़ा बोलती है कि कुछ रिश्तेदार होते हैं वो जब लड़ाई होती है ना तो बस किश्तियाँ जला के मतलब सारी सारी बुरी बातें बोल दी, सब कुछ बोल दिया, राइट. लेकिन घर 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 के मामला तो सियासत की तरह होते हैं कि तुम्हारे कल को तुम्हें फिर ज़रूरत पड़ती है, राइट. तो अगर आज तुम सब कुछ यू गो फॉल आउट, फिर कल को तुम्हारे पास वो रिटर्न की ऑप्शन नहीं होती. तो यहाँ पे जो ये रेसिस्ट रिमार्क्स होते हैं ना, और ये जो लैंग्वेज है, इसका मसला क्या होता है कि अब तुमने एक लड़ाई जो of course there's people involved, but it's more of like, okay, this is politics, this is सियासत, right. उसको तुमने इतने पर्सनल लेवल पे तुम लेके गए कि अब जो जज्बात है उसको तुम वापस नहीं ले सकते. इनफैक्ट अगर तुम मीम्स को देखो तो इट्स बेसिकली इंडियन मीम्स को उठा लो, राइट, और उन पे मतलब अफगानिस्तान का वो पिक्चर लगा दो. बट अफगानिस्तान और इंडिया बहुत ही मुख्तलिफ केसेस हैं, राइट. हाँ एग्जैक्टली. वेरी डिफरेंट सिनेरियोज. इंडिया हमसे कंसेप्चुअली काफ़ी दूर है, राइट, क्योंकि पहले दिन से हमेशा आर यू से. सेइंग कि कैसे कहते हैं जस्ट बिकॉज हम कैसे तो बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं और हम तो हमारा कल्चर सेम नहीं है? इज नहीं दैट नहीं, व्हाट यू हमारा ट्राइंग टू कल्चर तो से? बिल्कुल एक ही जैसा है. मतलब हम हमें भी देखो ना, हम भी गांव माता की इतना एहतराम करते हैं. और ईद 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 आर उल यू अजहा के दिन सेइंग बिल्कुल हमारे जो हमारा जो एहतराम है वो बिल्कुल ईद उल अजहा पे नजर आता है. तुम लोग कितने प्यार से मतलब उनको मेकअप कराते हैं और उन पे चादर लगाते हैं. पता नहीं क्या क्या.
भाई You say हमारा नहीं है ना यार। this is absolutely correct, right? कि हमारी societies में, ठीक है, and I'll take it more from this region. अजीब सा narrative है यार, and this is being pushed by कैसे कहते हैं the ruling elite right now. कि you have तुम, I don't know whether you follow the news in Pakistan. You shouldn't, because it's like utter crap, honestly. It's the most boring things ever. शेर शाह सूरी का हमने जी कैसे थे वो, what was that, वो हम लोगों ने उतार दिया because वो इन्वेडेड था। No, हमारे dude. कैसे No, थे it's डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं गोरी और कैसे थे महमूद गजनवी को क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो तो इन्वेडेड। no, no. मोहम्मद Like शाह, the thing is, दिस इज देखो हमारे यहाँ बस confusion है। Like Pakistan is one, आइडेंटिटी Pakistan is क्राइसिस, not a secret परपेचुअल है। आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस है टॉप लेवल का। हमें पता नहीं है कि हम क्या है क्या नहीं है। मतलब पहला पाकिस्तानी जो था वो क्या नाम है उनका मोहम्मद बिन उनका कासिम। मय्यद मोहम्मद बिन कासिम साहब रहमतुल्लाह। राइट, तो वो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह थे। और जो आखिरी पाकिस्तानी है तो पता नहीं वो कौन था। एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम भी पाकिस्तानी, दूसरी तरफ कायद आजम तो पाकिस्तान मतलब बनाना ही नहीं चाहता था। कायद आजम तो वो तो बस एक Oh, by the way, एलीट था। on this, right? Recently there was a live नहीं था, एक वीडियो थी that was uploaded by our Lahore gang. I don't know whether you know the Lahore gang or not. ठीक है, I don't know. Yeah, but शुक्र continue. है, Oh yeah, शुक्र है। isn't the Lahore gang just like the Muzammil Shah and all these people? हाँ, exactly those people. Okay. अच्छा, तो फाइनली इन दैट वीडियो, राइट, मुझे ना साद ने सेंड की फ्रॉम ईवन। उसने मुझे कहा Okay. कि यार ये ना इस वीडियो का ये सेक्शन देखना। Okay. मैंने कहा कि यार कैसे थे, by the way I shouldn't have said साद, but he Okay. sent it to me and he said यार watch this section. I was like okay, मैं देखता हूँ। So I watched it, and in that section, right, he finally admitted, Muzammil finally admitted कि what's his name, Qaid Azam wasn't a secularist. Okay. Yo, subhanallah. he said, and I quote, What did कि he say? अगर हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल सेकुलर है तो आप सेकुलरिस्ट बन जाते हो उससे ना। अगर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो तो यू वुड फाइंड कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वाज ए बिगर सेकुलरिस्ट देन जिन्ना। Okay. मैंने कहा यही तो बात हम कह रहे थे पीछे से। Exactly. That's the whole point, dude. I was like, this is what we have been saying for the longest time. बट Yeah. बट इनको कैसे थे, हमारी जो लिबरल क्लास है उनको थोड़ी होश के नाखून कैसे थे आने लग पड़े हैं। दे हैव रियलाइज्ड कि द शिप दे वर सेलिंग, व्हाट यू कॉल, सेलिंग इन, हैज स्टार्टेड सिंकिंग। तो दे आर ट्राइंग टू मिश मैश हियर एंड देयर टू गेट समवेयर। अब बट यार आई थिंक उनके मतलब उनके यार ये है कि उनका वो जो पूरा उनके सारे वर्ल्ड ख्वाब व्यू। टूट चुके हैं। ठीक है। ट्रम्प साहब ने सारे उनके ख्वाब बम्बों से उड़ा दिए हैं। ठीक है। वो मतलब the thing is like Americans are fascinating people. Okay. Like मैं कभी भी इनसे थकता नहीं हूँ। um, एक तरफ खासकर मुसलमान जो मुसलमान है ना अमेरिका में, वो बहुत ही फैसिनेटिंग बंच। ठीक है। मैं जब बात करता हूँ ना तो एक तरफ तुम्हें नजर आता है कि उनको मतलब एक बहुत गुस्सा है अमेरिका के ऊपर, सबके ऊपर। और मतलब वो ओपनली कह रहा है कि ओ हम बहुत बुरा कर रहे हैं ये वो। दूसरी तरफ उनके अंदर मतलब ये एक बहुत ही like एक्सेप्शनलिज्म। oh yeah, we the gangs, right? सारी मुसलमान दुनिया को देखो क्या बुरा हाल है उनका। हमारे यहाँ हमारे पास सुहूर फेस्ट होता है और कितने आज़ादी है और ये वो, राइट। विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर तुम अमेरिकन सोसाइटी को इन जनरल देखो, राइट, अमेरिकन सोसाइटी हमेशा डाइकोटोमस होती है। ओके। एक तरफ अगर तुम लिबरल्स को देखो, एक तरफ उन्होंने रूल्स वो बेस्ड ऑर्डर एंड XYZ वो सब चीज़ें करनी है, राइट। दूसरी तरफ अगर तुम उनके बिहेवियर को देखो तो जब मदूरो आता है न्यूयॉर्क में तो वो सब लोग जिन्होंने ममदानी को वोट किया था वो भी खुश होते हैं, राइट। वो भी पार्टी मना रहे हैं कि वो डूड डिड यू सी दैट, did you see that? Right? It's it's like exactly like जो खुशी उनमें होती है, I mean, you can see it, right? They can say whatever they want. वो जबान से वो कुछ भी बोले, like ओ ये तो बहुत बुरा हो रहा है और ओ ट्रम्प साहब तो मतलब ये वो, ना 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 ना, दिल में like खुश है बहुत ज्यादा, मतलब उनके दिल। American supremacy is at the heart of. Exactly, right? All the way। Yeah, there मैं was, एक बंदे से yeah, Imam Tom के साथ recently there was somebody sitting down and he was having a discussion about. ओ या हामिदी, या हामिद है या क्या नाम है उसका, वो हाँ, जिसने he अमेरिका wrote के ऊपर he किताब wrote दे this दी। book, right, कि किस कहते हैं, Yeah. why we need to like preserve American democracy. And by the way, but No, no, if no, you not want to, American democracy. American power. हाँ, American hegemony.
Yeah, American By hegemony. the way, if you want to see somebody who really can criticize like the American hegemony or American power properly, you'll have to Uh-huh. look at somebody like Imam Tom, because Yeah. he's really interesting in that paradigm. But anyway, yeah, continue. हाँ मतलब वही आर्गुमेंट है ना ना उसका आर्गुमेंट फिर भी मतलब थोड़ा सा मैं एक बंदे से बात कर रहा था काफ़ी तालीमी याफ्ता बंदा है काफ़ी समझदार बंदा भी है और इल्म वगैरह भी काफ़ी पढ़ा हुआ है मैं उससे बात कर रहा था वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो अवेयर नहीं है कि अमेरिका ने क्या क्या जुल्म किए हैं भाई कुछ लोगों के पास ये एक्सक्यूज होता है कि उनको पता नहीं होता कि क्या लेवल पे क्या क्या अट्रॉसिटीज हुई नो नो इसको सब पता है ओके एंड वो आर्ग्यू कर रहा था कि अमेरिका के लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे अदल पसंद लोग हैं right? तो वो उसका आर्गुमेंट क्या था कि अगर तुम अमेरिकन साइकी को देखो ना तो वो खुद को एक सुपरमैन साइकी की तरह देखते हैं लाइक दे आर Superman. सुपरमैन राइट जस्टिस ट्रूथ द अमेरिकन वे ओके मैंने कहा भाई लाइक वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था वो किसी और बंदे से बात कर रहा था वो एक तुर्किश बंदा था और वो से बात कर रहा था मतलब पूरी किस्म की उनकी लड़ाई हो रही थी मैं वहां पे बैठा हुआ मैं इंटरवीन भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उस कन्वर्सेशन की मतलब जो कैलिबर थी वो इतनी लो हो चुकी थी आई वाज लाइक डूड अगर तुम 2026 में बैठे हुए एक मुसलमान हो अमेरिका में और तुम एक एजुकेटेड बंदे भी हो और तुम ये आर्ग्यू करोगे कि अमेरिकन साइकी अमेरिकन जो सिंबलिज्म है अमेरिकन जो मतलब एक्चुअल आइडेंटिटी है वो एक सुपरमैन के ऊपर बेस्ड है ओके तो तुम्हें मतलब तुमने ना अमेरिकन तारीख पढ़ी हुई है ना तुम्हें अमेरिकन तारीख का कोई अंदाज़ा है और ख़ासकर तुम्हें अपने मुसलमान आइडेंटिटी का कोई अंदाज़ा नहीं है मैंने एक चीज़ देखी डाइकॉटमी की हद बताता हूँ मैं एक बंदे से बात कर रहा था वो बंदा यहाँ बहुत पसंद किया जाता है ठीक है वो एक सिक्योरिटी वाला बंदा है वो आता है वो एक स्पीच कर रहा था वो अपने बैकग्राउंड कौन के बारे में कहता है हाँ कौन बंदा था? मतलब वो एक बंदा है लाइक सिक्योरिटी का बंदा है काम करता है किसी कंपनी में वो हमारे अच्छा पास अच्छा। मिलने आया था राइट तो वो बात कर रहा था अपने तारीख के बारे में कि मतलब मैं कौन हूँ एंड वो सब बहुत पसंद कर दे उसको ठीक है वो कहता है मैं जब एक्स में था तो मैं इराक में सर्विस करता था ठीक है मैं इराक में लाइक वो अमेरिका का नहीं था अमेरिका का वीज़ा उसको बाद में मिला था वो इराक में मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम कर रहा था ओके इन सब या मतलब ये सब एक पूरा लाइक मुसलमानों के एक सर्कल बैठा हुआ है राइट एंड मैं सबको देखता हूँ लाइक किसी के मुंह से भी लाइक हंसी खत्म नहीं हुई लाइक किसी की भी मुस्कुराहट पे कोई असर नहीं पड़ा एंड आई एम लाइक डूड तुम लोगों ने सुने कि इसने ये लाइक कौन सी बात कही है राइट लाइक अगर मैं उसको तर्जुमा करूँ तो बात यह है कि मैं तुम्हारे भाइयों को कत्ल करने वालों के साथ था और हम उनको मार रहे थे और उन सबको मारने के बाद अभी मैं यहाँ पे आया हूँ लेट्स हैव अ नाइस कैंडिड कन्वर्सेशन ओके लेकिन उनकी साइकी में ये है ही नहीं कि भाई जो इराक में लोग मरे हैं वो हमारे भाई हैं हम्म। बोलने में कुछ भी बोल दो ओके बुलवाना को किसी से कुछ भी बुलवा लो By the way, I know we generally tend to कैसे कहते हैं discuss more about Muslims because that is like generally what our हम्म, worldview is. कि we need to talk about this particular issue because it's close to home. But this is हम्म, something that is across the board in कैसे कहते हैं America, right? It's not हम्म। something very limited to the Muslims. नो Take for example, मुसलमान बोले take the example of like American like leftists, right? You rarely find them discussing कैसे कहते हैं wars in a sense कि they were unjustified because they were ठीक है. Take the example of like weapons of mass destruction in Iran in Iraq ठीक है. They're not criticizing it because the war itself was wrong period ठीक है. The leftists are criticizing it because they did not find any कैसे कहते हैं कमान weapons of कोई mass. पूछ वन सेकंड सर इसका कोई पूछ रहा है कि सर हसन आएंगे यार इतनी by the way we did record videos with him and inshallah कैसे we'll be uploading them soon यार. या Yeah, right. आपने कौन कौन सी वीडियो रिकॉर्ड की है बारे में Yeah, we recorded like a 4-part series with him discussing Middle East. Okay, हम्म, and the first episode will inshallah be regarding Iran. Second हम्म, would be Turkey, then Saudi Arabia, and then finally UAE. These are like the हाँ, 4 videos that are in. okay Uh, sounds very interesting okay you continue तुम leftist हाँ, Americans so they are not talking from the perspective कि look ये जो है ना किसी तरह our invasion of Iraq was wrong period. They'll always try to justify it. Look, it was wrong because we could not find like because there were no weapons of mass destruction. Implication being that if we had found weapons of mass destruction, then तो our वो illegal जस्टिफाई हो invasion जाती somehow वो justify हो जाता है. Just because we did not find it
then it is wrong. And they take the example of like all the veterans that come from किस कहते हैं from these wars, right? American leftists का rhetoric ये होगा, see these guys are like poor people that have no, they are being pushed into the military industrial complex, and we need to sympathize with them in order to help them understand, and that is how we're going to change the society. There is no actual critique on, like, can you imagine these people, Americans, and that people would have dealt the same way with the Nazis after World War II, saying कि यार, you know, they were just following Hitler के order, तो कोई मसला नहीं अगर उन्होंने 6 लाख या 12 लाख या जितने भी कैसे थे यहूदी मार दिए, और that's all fine. Can you imagine them saying this? But just because it's like Muslims, nobody cares. और Honestly. यार यही बात है ना, मतलब देखो सिंपल सिंपल लाइफ स्टोरी है इनकी, ठीक है। टीनेजर बनो, शराब पियो, जिना करो, जाके लोगों को मारो, फिर वापस आओ और फिर एक किताब लिखो कि किस तरह हमारे पर हम पे बहुत जुल्म हुआ है क्योंकि Oh हमारे yeah, प्रेसिडेंट ने हमें we झूठ were बोला। so traumatized हमें हमारे ट्रॉमा को देखो, हम मुझसे 1 लाख बंदों को मरवाया है उन्हें, मतलब इनकी झूठ को देखो। 1 लाख मासूम 2 साल के बच्चे थे और मैं उनको मार रहा था, और ये मुझे कह रहे because थे कि मारते जाओ। ये because मुझे I मेरे didn't have ट्रॉमा any को देखो। agency, because I didn't have any agency. वो जॉर्ज बुश जो था ना, वो मेरे हाथ एजेंसी पकड़ क्या, के अपनी एजेंसी छोड़ो, सीआई एजेंसी इनकी एजेंसी है, बस वही इनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस but एजेंसी। but but are you suggesting कि वेस्टर्न मोरालिटी जो है वो हमारे से सुपीरियर नहीं है? वो Which बहुत सुपीरियर है यार, इतनी सुपीरियर है, मतलब क्लास ऑफ इट्स ओन, by the way, there is such a messed up narrative that is going around, and I don't know why people just try to make a case for this. And what they say? There is an Epstein in every country. There is an Epstein in every, and a very close friend of ours, right? He shared this as well, and I was like, no, no, no. See, yes, does what you call sexual trafficking happen? Yes. Are there issues with in every country similar to this? I was like, yes. But what Epstein did was something very different. You cannot compare it to. And I was like, I'm not trying to dismiss what you call the allegations or what you call crimes that happen in our country, which do. कोई उसको deny नहीं करता. We know how what you call people in power work. But the Epstein case is something very, very, very particular to this very particular society that is very morally superior to us. I don't think, see, as much as degeneracy that can come in our societies, okay, you have to be at a very rotten place to do the things that they did in Epstein file. और देखो ये बात भी है ना कि हमारे एलीट से हमें वैसे भी हम कौन सा कह रहे हैं कि नहीं हमारे एलीट तो काफी अच्छे लोग हैं और बहुत और दीनदार, मैं कौन पांच सा कैसे नमाज। कहते हैं, आर दे अंडर द इंप्रेशन कि वी आर वोटिंग फॉर आवर एलिट्स Exactly, like it's not like ट्वाइस? हम कर रहे हैं, but the whole, like, okay, what's the difference? The difference is कि हमारे यहाँ जब अगर इस तरह का कुछ होता है ना तो we are shocked, okay? हमारे यहाँ like अगर किसी के, okay, किसी के भी बस में हो और उनको पता चले कि लेट्स से हमारे एलिट में से एक्स बंदे ने ये किया हुआ है, उनका पहला रिएक्शन क्या है? करना, okay? That's a simple Even by the reaction, way, and right? the thing is, even if you do not have the power to do anything, people Yeah, will yeah, be outraged regardless. yeah, no, the reaction वही है। देखो हमारे यहाँ तुम Are you saying अगर, कि कैसे थे मौलाना फजल रहमान is not the Epstein of Pakistan? of course he is. Look at him. He wants to marry 14-year-old girls. Um, हम वैसे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं. Let's try to watch some videos. But let's talk about Iran and then let's try to watch some videos. Okay, sure. Okay, sure. Okay, ईरान पे आते हैं. Okay, so just to cover up क्या हुआ क्या है, okay, and you No, can no. add to it. By the way, Okay. let's talk about like how the mullahs actually came in power all the way back, going back to 53, because we इतना, have nothing. लेकिन डिटेल में ना जाओ. हाँ, We'll डिटेल में नहीं talk जाते. about. हाँ, just for general audience, because a lot of people don't have like a lot of information on these issues. Mhm. The mad mullahs in Iran did not come up out one certain day and decided to kill off all the leftists. That's just not what happened. Acha, Mhm. we'll go back to 1953, and I'll try to like summarize this in like 2 to 3 minutes. होता यह कि 1953 में मोहम्मद मोसद्देक जो है ना, मोसद्देक, he nationalizes Iran की oil field, and he says कि we deserve कि हमारे मुल्क में oil है, हम लोग कैसे थे, profits हमारे मुल्क में होंगे. उससे पहले जो था ना, it was largely under the British, and they were taking like 50 to 60% of the profits that they were getting. So CIA, and this is not like conspiracy theory, nothing of that sorts. CIA backed a coup, ठीक है, which brought about ये जो है रजा पहलवी का कैसे थे जो अब्बा था, ठीक है, शाह ऑफ ईरान. It gave him absolute power. होता ये है कि उसके बाद जो है ना,
from 1953 to 1979, what you have is a brutal dictatorship with some of the most brutal कैसे कहते हैं, state apparatus to crush down the regime, like dissent. उसमें you Resistance, have, yeah. you have something like Savak. Savak was so brutal. ठीक है, Savak को if you want to understand, right? Because Pahlavi went on this westernized modernity kind of thing के औरतों के हिजाब भी निकालने हैं और ये सारा कुछ ना, all that kind of things के, and you know you see it all over social media. Okay, Iran before 1979. I mean, yeah, you know, there is a certain element of there's this interesting element that is going on right now in the world, and that is mimification of geopolitics. Okay? Yeah. People do not read, people do not कैसे कहते हैं, grasp the things that are, they just watch memes and they try to make sense of the world from those memes. Okay? So if your entire worldview comes from those two pictures where one is wearing hijab or niqab, and there is these two girls, कैसे कहते हैं, they're like in bikini there on some beach, okay? And you are some westernized कैसे कहते हैं, dopamine affected individual, you would obviously think these mad mullahs. So होता ही है कि 79 में, and me and Afnan, we have covered this a lot on our channel about Iranian revolution. So eventually होता ही है कि 79 में you have the mad mullahs come and seize the power because enough is enough and we need our country back. So अच्छा, by the way, just to talk about the revolution, right? Here there is so much vilification even by the leftist in America. They'll try to be like all these people, like we are anti-war, we are this. And you know what are the things they're talking about? They say these are the things, and these are people that we actually really respect, by the way, because they've done some really good work. They'll say the Islamic regime, if it ever enjoyed legitimacy, does not anymore. Okay? Because you know how it happens. It just happens that you survive for 47 years without any legitimacy. Because in Western mind, okay, their superior moral culture, you need to play a party, क्या कहते हैं, basketball, where you pass to one team and to every 4 years, and only then you can have legitimacy. Okay? Other than that, legitimacy is not possible. So, by the way, these are individuals that we have covered on this channel. Their books, not Norman Finkelstein, by the way, not Norman Finkelstein. Just to be clear on that, but it was quite surprising to see that. So, 79 mein they take up power, and since then they have been actively hostile to America, and they have been saying death to America, death to Israel. ठीक है, अब मसला ये है कि Israel is saying कि they are our existential threat. So now we are वो क्या कहते हैं, we are at the final countdown of this issue, I think. Okay, it's either or. It's either by the end of this you have the Islamic regime or you have the Zionist regime. There is no middle ground here. There is no middle ground. And एक चीज समझनी है, और इंशाल्लाह when we release the video with Dr. Bukhari, you guys will understand this as well, कि Islamic Republic of Iran is an ideologically run state. It has many issues. It's not a saint, किस कहते हैं, by any stretch of imagination, like any other nation. But it is an ideological state, और उस state का मसला ये है कि it cannot divert away from its revolutionary core, right? Revolutionary ideology. So either it survives or it gives way to something else, and subjugation of the Muslims in the region. That is the end game. अब उसके कैसे थे रिजल्ट में, सुबह सुबह मैं उठा तो मुझे अचानक पता चला कि जी 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले ईरान पे हमला हो गया है, and now we are here, and Bahrainis are celebrating their country being bombed. And the reason they are being only in the Muslim world, by the way, only in the Muslim world. There is like अक्सर ये बात होती है कि जब कैसे बॉम्ब गिर रहे होंगे ना इराक पे या ईरान पे, तो people will be cheering their liberation. That only happens in the Muslim world when another Muslim country is bombing their country. मैं तुम्हें एक मजे की एग्जांपल देता हूँ. Last year or 2-3 years ago I read this book. वो है सदाम हुसैन पे थी. तो फर्स्ट गल्फ वॉर पे ना सदाम हुसैन थ्रू सम मिसाइल्स एट कैसे कहते हैं इजराइल. तो an American कैसे कहते हैं official, right, he was in the room. He says कि all these countries, कैसे कहते हैं, Saudi Arabia, Kuwait, all these countries were at war with Saddam Hussein. And they were like, the moment, and he's like, all of these guys are like generals sitting next to me.
the moment Saddam Hussein bombs Israel, ठीक है, they're all cheering for Saddam Hussein. So you really, man, people don't understand कि कैसे थे, how much of कैसे थे Zionist infiltration there is in our leadership. ठीक है, this is not कैसे थे, at this point it's not even debatable. These guys are very detached from the general population. कि बहरीन में वो लोग कैसे थे, they're literally coming out and they're cheering. There is a video of like the drone coming down and the guys going, please hit, please hit, please hit. यार मैं तुम्हें एक चीज बताया। मैं किसी फलस्तीनी लड़की थी, मैं उससे बात कर रहा था। मैंने उससे कहा, तो मैं उनसे बात कर रहा था हमारे बेदाब के काम के बारे में, स्पेसिफिकली जो हम रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, कि क्वेश्चनर्स कलेक्ट करवा ले, डेटा कलेक्ट करवा ले कि लोगों के क्या ख्यालात हैं। तो मैं उससे बात कर रहा था ना, एक चीज़ जो मैंने उससे बोली, मैंने उसने कहा कि मतलब इसका मकसद क्या है। तो मैं उसको एग्जांपल्स दे रहा था कि फ़ायदा क्या होगा। एंड एक चीज़ जो मैंने कही, मैंने कहा तुम गेस करो कि कितने सऊदी अरेबियंस एंटी इसराइली है, राइट। एंड यू रिमेंबर हमने वो Yeah, yeah. चीज़ कवर की थी चैनल पे, राइट। जब मैंने उसको नंबर्स बताया तो वो मतलब उस लाइक शी वाज सो सरप्राइज्ड, राइट। शी वाज लाइक डैम, रियली। आई वाज लाइक, बाय नंबर्स सऊदी अरेबिया इतना मुखालिफ है कि बाकी कंट्रीज के साथ तुम कंपेयर करो तो उनसे ज्यादा, राइट। इन सारे ममालिक के साथ कंपेयर करो। तो दैट्स काइंड ऑफ द डिवाइड। डिवाइड इतना बड़ा है कि तुम्हारे पास एक तरफ basically like 95%, 96%, 98%, it that those are the numbers that we are talking about। and दूसरी तरफ तुम्हारे मतलब वो लोग हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं, right। just absolute atrocities, complete And yeah, you कैसे थे, know। even with the case of Saudi Arabia, right? Because Saudi Arabia has given some amount of bread and circus to its people, right? Mhm. So they're able to have some semblance of control over there. But even then, you know this better than me. Saudis grew up in a very different कैसे थे worldview than what they're being pushed for on the social media. MBS के 10, 15, 20, 40 so कैसे थे Twitter bots cannot convince you के the entire Saudi population is just anti-Islam and they're just waiting for कैसे थे rave parties in Jeddah. देखो ना, Dude, no, अगर तुम उसमें भी देखो ना, अगर तुम रेव पार्टीज वगैरह में देखो, the people are like, oh, you know, all these people are showing up। have you seen a party in Pakistan? like come on dude। okay, जहाँ जो लोग तुम्हारे पास रेव पार्टीज वगैरह में आ रहे हैं, they're like a very small tiny हाँ population। और वैसे भी it's very understandable। हमारे यहाँ लोग हैं, हमारे यहाँ इन रेव पार्टीज में जाओ, ओके। ये वो लोग हैं, इनमें से तुम इनसे पूछो तो ये वो लोग हैं जो मतलब वहाँ रेव पार्टी में खड़े होकर तुम्हें कहेंगे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक इस्लामिक हुकूमत आ जाए। लाइक ये जो जो लोग, एंड अगेन हमने इस बारे में बात की थी ना चैनल पे कि हज्जाज इब्न यूसुफ की जब हमने बात की थी, राइट। जो मुसलमान पॉपुलेशन है वो चाहे मतलब वो अक्सर, ये हमारे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो गाना भी सुन रहे होंगे और दुआ भी कर रहे होंगे कि अल्लाह तालिबान की जैसी हुकूमत आ जाए। लाइक दे डोंट केयर। दिस इज हाउ वी आर। लाइक पीपल आर गो दिस हिपोक्रिटिकल। नो, इट्स नॉट हिपोक्रिटिकल। इट्स कि एक तुम्हारी आइडियोलॉजिकल एक कमिटमेंट है और दूसरी तुम्हारे डे टू डे यू नो सिंस है। कोई भी ये लाइक एक्सपेक्ट नहीं करता कि जब कोई फॉर एग्जांपल कोटान को तुम चेंज होते हो तो तुम्हारे पास हर बंदा होता है जो 100% कभी कोई गुनाह नहीं करता। हाँ फॉर एग्जांपल purity why is the narrative jinnah, जो है। yeah, why is the jinnah phenomena such a like a confusing thing to so many people? Like कि ओ जिन्ना साहब वो देखो वो शराब भी पी रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, राइट। क्योंकि लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि एक तरफ तुम्हारे एक्शंस होते हैं जो कि तुम्हारे वहां पे तुम्हारे नफ्स, तुम्हारे शैतान, वो सब कुछ मिलके तुम गलतियां करते हो और तुम्हारी एक लाइफ जर्नी भी होती है, राइट। और दूसरी तरफ तुम्हारी कमिटमेंट्स होती है। आई गिव सम एग्जांपल्स, ओके। मौलाना मौदूदी साहब पार्टी बनाते हैं जमात इस्लामी, ओके, 40s में। पता है सबसे बड़ी वजह क्या थी जहाँ जिसकी वजह से देवबंदी उलमा उसको छोड़ रहे थे और उसके मुखालिफ थे? कि ही इज नॉट रिलीजियस इनफ, ओके। क्योंकि मौलाना मौदूदी साहब की तब तक बड़ी दाढ़ी नहीं होती थी, हाँ, राइट। he wasn't institutionalized Molvi, right? या बट इट वाज मोर बिकॉज ऑफ हिज एक्शन स्पेसिफिकली, क्योंकि उसकी बड़ी दाढ़ी नहीं होती थी, उसकी छोटी दाढ़ी होती थी, राइट। ही हैड लाइक मोर ऑफ लाइक व्हाट यू हैव, राइट। ही डिडंट हैव लाइक द मुल्ला बियर्ड, राइट। ये तुम्हारे पास लाइक दिस इज हाउ पीपल आर। लाइक तुम मौलाना मौदूदी साहब को देखो, मौलाना मौदूदी साहब ने किताब लिखी पर्दा, ओके। अभी भी पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर है, लाइब्रेरीज वगैरह में जाओ वहाँ पे होती है, बुक स्टोर्स में भी होती है, राइट। पर्दा मेरे पास भी काफ़ी पड़ी हुई है घर में, ओके। उसमें वो पर्दे के बारे में उसके एक कुछ राय है और बहुत सख्त है,
right? Because Maulana Mududi Sahib, by the way, he was a Deobandi alim. Like he had a Deobandi degree, right? He studied in Deobandi Madaris, right? So he was like a proper Deobandi in that sense. वो claim नहीं करता था क्योंकि उस मतलब he had read a lot of other stuff as well, and he didn't want to be like put in a box. बॉक्स, लेकिन हाँ। मौलाना मदूदी साहब पर्दे पे जो किताबें बहुत सख्त है, उसकी अपनी बीवी पर्दा नहीं करती थी, बाय द वे, हम्म। राइट? उसकी अपनी बीवी पर्दा नहीं करती थी, वो हिजाब भी नहीं करती थी। नाउ व्हाट्स द पॉइंट इज पर्सनल लाइफ कुछ और चीज होती है, और जो तुम्हारे कमिटमेंट्स होती है वो कुछ और चीज होती है, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो तुम एस्पायर करते हो। आइडियली हर चीज अलाइनमेंट में होनी चाहिए आइडियली, लेकिन कुछ चीज होती है जो तुम एस्पायर करते हो कि भाई मैं इस तरह। हर मुसलमान चाहता है, अगर तुम मुसलमान अपने दोस्तों वगैरह के पास जाओ, वो चाहता है कि वो 5 वक्त का नमाजी हो, वो कभी भी कोई गुनाह ना करे। लाइक एस्पिरेशन में वो उनकी बात होती है कि यार हम काश इस तरह होते, राइट? लेकिन अगर तुम उनको प्रैक्टिस में देखो तो अक्सर लोग इस तरह नहीं होते, नहीं, बिकॉज जो लिबरल माइंड की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर तुम प्रैक्टिकली एक्शन में तुमसे कोई गलती हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो यू शुड जस्ट एक्सेप्ट दैट एज लाइक योर आइडेंटिटी। क्योंकि उनकी आइडेंटिटी क्या है? देयर आइडेंटिटी इज व्हाट दे डू, राइट? देयर हाँ। आइडेंटिटी इज व्हाट दे डू। फॉर एग्जांपल, अगर तुम आई थिंक दिस इज समथिंग वी शुड लाइक someone needs to really study homosexuality in the Muslim civilization. Okay? हम्म। पूरी तारीख में हमारे पास homosexuality का हमारी एक तारीख रही है। There is there's a guy. He's lives in America. He's an Iranian. Very interesting guy. Very interesting in many ways. ईरान पे आया था। शरफ सादे उसका नाम है, right? Um, one of the things he said that Westerners को ये गुस्सा है कि हम homosexuality भी उनसे अच्छा कर लेते हैं। Like, because we have a history of like 1,000 years of like homosexuality and बच्चाबाजी what not, right? मैंने एक चीज नोटिस की, तुम वेस्टर्नर्स को देखो, उनके जहन में मतलब इट्स सो लाइक सो मच आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन देयर हेड। उनको ये बात समझ नहीं आती कि एक बंदा होगा जो फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअल एक्ट्स में मुलव्वस है, वो फिर भी होमोसेक्सुअलिटी से नफरत भी करता है, चाहता है कि वो बैन भी हो। वो खुद को भी एज होमोसेक्सुअल नहीं देखता, राइट? वो खुद को उस तरह नहीं देखता। हाँ, क्यों? एग्जैक्टली। कि उसके जहन में जो ये चीज है, उसके जहन में ये नहीं है कि तुमने अगर एक गलती कर दी तो वो आइडेंटिटी का तुम्हारी मतलब यू नो फॉल्स एक अपार्ट। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। ओके, ओके, मैंने एक दफा शराब पी तो मैं अब बस पक्का शराबी हो गया हूँ पूरी जिंदगी, राइट? अफनान खान शराबी, लाइक शराबी के अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। बाय द वे, मैंने कोई शराब नहीं पिया, अस्तगफिरुल्लाह, मजाक है, मैं मतलब मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। लेकिन मैं लाइक ये जो माइंडसेट है कि भाई ये इस तरह, क्योंकि उनके पास कोई और आइडेंटिटी है नहीं, राइट? देयर इज नो एस्पिरेशन, दे आर नॉट एस्पायरिंग टू बी एनीथिंग। हमारे यहाँ अगर तुम ये डबल ब्लाइंडेड सी चीज रख सकते हो, वो क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास है, एक है तुम्हारी एस्पिरेशन, ओके, इस तरह मुझे होना चाहिए, ओके, और दूसरा है तुम्हारे एक्शंस, और वो तुम्हारा है कि इस तरह मैं हूँ, राइट? लेकिन वहां पर अगर तुम्हारे पास कोई मेटाफिजिकल ग्राउंडिंग नहीं है, कि तुम्हारे पास कोई कुछ ये नहीं है कि दिस इज व्हाट आई शुड बी, तो फिर तुम्हारा वही है कि तुम ये कहते हो कि इट दिस इज व्हाट आई कोलैप्सेस एम। अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन, कैसे कहते Yeah, I mean, you don't have an identity. Like, what's your identity? Your identity is what you do. Okay? अगर तुम्हारे हाँ। पास कोई आइडेंटिटी और नहीं है तो वही है कि जो तुम कर रहे हो। ओके? I'm a basketball player. Right? That's my identity because I play basketball. Right? काम, तुम अगर देखो, काम बहुत ही बड़ी चीज है। Like, career is basically the biggest identity thing in places like America. Okay? हाँ। तुम किसी से भी मिलो, पहला, ओके, नाम, दूसरी चीज क्या है? What do you do? आई वर्क इन Okay? फाइनेंस, आई वर्क Yeah. इन कैसे That एकेडमिया। okay, that's एक जिस तुम कहते हो वर्क इन फाइनेंस, पूरी प्रोफाइल सामने आ गई। ओके, दिस इज अ मैन फ्रॉम द किंगडम ऑफ फाइनेंस। ओके, उसकी उसके उसके उसूल और एप्स्टीन जवाबित, उसके एप्स्टीन उसकी पूरी क्लास जिंदगी जैसे। बस फाइनेंस है, राइट? दैट्स द थिंग। हमारे यहाँ अगर तुम किसी से पूछो लाइक आई वर्क इन फाइनेंस, वर्क इज जस्ट वर्क, राइट? हाँ। लाइक वर्क इज वर्क, पीपल आर, oh yeah, it's like I'm X, you know क्वेश्चन भी मुख्तलिफ तरीके से होता है, बाय द वे। अगर तुम देखो तो अक्सर हमारे यहाँ जो होता है वो क्या है कि मतलब लाइक व्हाट्स योर सोर्स ऑफ इनकम, दैट्स हाउ पीपल यूजुअली लाइक, हाँ। दैट्स काइंड ऑफ हाउ पीपल फ्रेज द हाँ। हाँ। क्वेश्चन, कि पैसे राइट? कैसे कमाते हो। पैसे कैसे कमाता हो, एग्जैक्टली। वहां पे जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू, राइट? व्हाट्स योर करियर, व्हाट डू हम्म। यू डू, राइट? लाइक यही तुम्हारी जिंदगी है, उसके अलावा तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। एनीवे,
तो जो अभी सिचुएशन है ईरान की वो यही है ना कि ईरान पे हमला होता है, इसराइल पहले हमला करता है, उसके बाद यूएस हमला करता है, ईरान रिटेलिएशन में इसराइल पे हमला करता है, और यूएस बेसिस कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी, एनी अदर प्लेस, UAE. यूएई, ओह एग्जैक्टली, अबू धाबी। ओके, ये 5 जगहों पे, 6 जगहों पे By the इसराइल way, की भी। by the way, if America is the great Satan हम्म, and Israel is the little Satan, हम्म। where does this junior Abu minion of Dhabi, the Satan? where does Abu Dhabi? It's By the way, it's I know. By the way, I know. किस कहते हैं, there's like a lot of that's happening in Iran, and Allah Taala किस कहते हैं, उन सबको किस कहते हैं, उनकी आखिरत आसान करे, for everybody that's dying at the hands of the Zionists. ठीक है. But honestly, there is some कैसे थे satisfaction watching Tel Aviv and Dubai being bombed in a single day. यार. I'm not even joking. I know it's like so sadistic to say that, but yeah, honestly, that place, कैसे कहते हैं, I was there कैसे थे 3 years ago, 4 years ago, Dubai. Dubai, like I went there because I just had to. But God, that place is so less, yeah. Honestly, like there's no element of humanity in that place. Like, why is that place? Like, honestly, you ask, right? Why? What is happening here? Like, I don't get it. It's like just concrete. वो कहते हैं ना, it's like a jungle of concrete है वो. yeah. एंड किस कहते हैं, एंड हमारे, हाँ, मैंने शायद तुम्हें से ये पता नहीं किसको, किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो आई वाज लाइक यार कि सारी उम्र ना हमें इनसे सुनना पड़ा कि दुबई बनो, दुबई बनो, दुबई बनो, चलो जी आज रात के लिए तो पाकिस्तान, कहते दुबई जो है ना दुबई पाकिस्तान बन पाकिस्तान बन गया. गया। तो यार असल में ये है ना कि again हमारे लोगों again को, यार, this is not to laugh at the misery of the people that are suffering right now, ठीक है, of course, honestly. yeah. This, so I know cases, and UAE is a very, honestly, it's a dichotomy in aspect के there is no कैसे the native population there, ठीक है. 70 to 80% ऑफ तुम्हारे घर से भी कोई ना कोई दुबई में होगा, मेरी अपनी फैमिली में से काफी लोग दुबई होते हैं, ठीक Mhm. है. तो these people are like slaves, honestly. That is like modern days. मैं कैसे थे ना, रिसेंटली जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे दुबई पे, कैसे कहते हैं, video with Dr. Buhari. So he was like talking about like a lot of things about Dubai, but he didn't want it to say the word. And I was like, you just mean slave plantation, right? Okay. It's essentially a slave plantation, yeah. And these people are like okay with that. That's what they want Pakistan to become. Okay. यार हमारे And लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है ना, अगर तुम हालात को देखो तो वो जब जाते हैं तो उनकी नहीं अपनी नहीं, I जिंदगी agree. बेहतर No, होती no, है। I'm not. नहीं नहीं, I'm not talking about the immigrants. I agree Mhm. यार कि कैसे थे, there are no conditions over here. मैं ना कैसे Mhm. थे, जब my dad himself was lived in कैसे थे Kuwait for the longest time, and there are no Mhm. rights over there as well for the immigrants. ठीक है. Mhm. तो मुझे एक टीचर ने एक दिन पूछा कि आप लोग इतनी क्यों बात करते हो पाकिस्तान की, आप लोग तो पाकिस्तान में रहते नहीं हो, ठीक है. I was like, my dad doesn't want to stay there. Problem is that there's nothing over here. Yeah, what are you gonna do, Okay. Shah? He's working as a slave over there. He would much Mhm. rather work here if there was something here. So I'm not Mhm. talking about them. I'm not talking about it. When I am right now, when I'm talking about this special, the elite in this country that wants to make Pakistan uh, दुबई। on the model of Dubai. हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि like I don't understand what they really want. यार ये तो मतलब इनके अपने ख्वाब है। I don't know. Like I'm not been to you have been to Lahore, right? And you have Mhm. criticized it a couple of times, but there is some element of like soul in Lahore, okay? Of course, yeah, And that exists has a for right। every city. This it exists for every city. I Mhm. go to Sialkot, I go to Faisalabad, and across the board, right? There's something that makes that city that city. This is particular to this city, and this is why this city is the way it is. Yeah। ठीक है. Mhm. Like Lahore में आओगे तो you have this constant like hustle bustle, and that's very Lahore. Like Lahore में in on a weekend you can go at 3 p.m. and get nashta. ठीक है. Listen to me, okay? Here's what Dubai is, okay? Dubai is a postmodern wet dream, okay? हाँ, That's what exactly, Dubai is। exactly. It's a कि postmodern wet there is dream, no truth. okay? There is no truth. There is no sense of क्या कहते हैं, justice. There is no sense of uh, reality. Everything is just for the sake of progress. ठीक है. Yeah, no, दुबई दुबई एक पोस्ट मॉडर्न वेट ड्रीम है। वहाँ पे उनका उनका और कोई मकसद नहीं है, उनको बस यही है कि जो है, लाइक जो है वही है, राइट। हाँ, live in the बट moment.
live, और वो live in the moment भी एक बहुत particular तरीके से, हाँ like the dichotomy between the people, the dichotomy of the whole situation. But by the way, personally, like I don't have anything much against Dubai. अगर वो फॉर एग्जांपल अपना लाइक ये इसराइल वाला एक्ट ये सही करते हैं और कुछ और थोड़ी सी चीज़ें वो सही करते हैं, तो लाइक आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। उनका जो जो मसला है ना, वो मसला ये नहीं है कि वो क्या है, मसला ये है कि तुम्हें एक साइड चूज करनी होती है भाई। पहले जो लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि हमें दुबई होना चाहिए, वी कैन नेवर बी दुबई। ओके, दुबई इज नॉट अ कंट्री। ओके, दुबई एक छावनी है, इतना इतनी सी जगह है, तो कि पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान में लोग रहते are you हैं। saying कि Pakistan is not a America की colony? Are you लिसन, saying that? पाकिस्तान इज अ कंट्री। ओके, पाकिस्तान में लोग होते हैं, पाकिस्तान में खानदान होते हैं, पाकिस्तान में बिजनेसेस होती है। दुबई एक छावनी है। ओके, इट्स अ मेड अप थिंग, इट डजंट एग्जिस्ट। ओके, लाइक इट्स लाइक अ माइनक्राफ्ट सिटी। ओके, माइनक्राफ्ट में अगर तुम बहुत बड़ा शहर बना लो, इट्स स्टिल जस्ट अ माइनक्राफ्ट सिटी। ओके, पाकिस्तान एक एक्चुअल कंट्री है, पाकिस्तान की एक्चुअल वसअत है, जगह है, सहरा है, जगह लोग हैं। लाइक पाकिस्तान की एक एक्चुअल हिस्ट्री है, जो रीजन है उसकी हिस्ट्री है। दुबई, हकीकी दुबई क्या है? हकीकी दुबई वो है जो तुम्हें वहां सहरा की तरफ जब जाते हो ना, और तुम्हें कुछ खानदान मिलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, ठीक है, यू नो वो दुबई है। ओके, दैट्स व्हाट दुबई एक्चुअली इज। ओके, जो सहरा की तरफ जब तुम दुबई में जाते हो, तुम्हारे कुछ लोग मिलते हैं, कुछ जगह मिलती है, कुछ बकरियां मिलती है, कुछ ऊंट मिलते हैं। दैट्स व्हाट दुबई इज। बाकी सब तो ये इट्स जस्ट अ पोस्ट मॉडर्न वेट ड्रीम, और गोरों के लिए बनाया गया है। गोरों को जब गर्मी चाहिए होती है By तो the दुबई way, में आते हैं। Ayatollah Khamenei has been martyred. Iranian media ने confirmation दे दी है। इन्ना कंफर्मेशन हो लिल्लाह, गई है। इन्ना लिल्लाहि व ना इन्ना इलैहि ना राजिऊन। ना राजू, कैन यू ओपन सम न्यूज़? Yeah, you have that, किस कहते हैं, लेट्स सी। you have the hosting rights, अल्लाह ताला के सिवा। ना ना, व्हाट इज दिस? This is किस कहते हैं, the what is this? This is in Iraq. Protests that are happening in Iraq. The previous one is in Morocco. Mm-hmm. Just go on Twitter if you have Twitter. I don't have Twitter. Let's go on something on YouTube or something. I don't have Real, Twitter. you Okay, should make Twitter, man. You should make Twitter. are you sure? Yeah, I mean, ईरानी मीडिया अगर कंफर्म कर रही है तो फिर सच ही होगा। लेट्स सर्च अब अल जजीरा। आई थिंक अल जजीरा पे बात हो रही है। अल जजीरा। Search the latest one. Search the latest one. ये कब का है? अल जजीरा Hey, लाया। this is, by the way, this is uh, at least now. What do those नहीं, what do our friends say who said कि कैसे रहे, कि this was all an act? It remains to be seen, but for a considerable amount of certainty, we can say that the legacy that we are talking about from Iran's Supreme Leader Ayatollah Khamenei is coming from the previous Supreme Leader of the country, Ayatollah Khomeini. And then this is deeply rooted when it comes to the ideologies inside the Islamic Republic. And on that, we can say that there might be a change from one person to another, but the ideological foundations are still out there, and that's going to You there, Afnan? highly effective when it comes to the trajectory of Iran's behavior for the years down the road. By the way, I think that does explain why they decided to like go all out on कैसे थे Dubai and everything. Well, the What do you think is who do you think is gonna take his place? I don't know. It depends if his son was martyred as well. So otherwise, his son was the most likely one to be replace him. But यार देखो ना, if मैं कैसे ये एग्जांपल किसी और को दे रहा था आज कि if the Iranian regime is as weak as they claim it to be, ठीक है, Mhm. take the scenario of Pakistan, ठीक है,
take the example of, forget Pakistan, because then it can go into controversial realms. Take the example of America. Take किस कहते हैं, Donald Trump किस कहते हैं, gets assassinated, Pete Hegseth gets assassinated, Mark Rubio gets assassinated. Do you think कि किस कहते हैं, America would continue on the same path and few of the generals get assassinated as well? Most likely not. Most likely not. The reason for that is because America is not an ideological state. ठीक है? America can play that realpolitik kind of thing that they want to play. But the issue with Iran is they do not have that realpolitik wala issue with them. They need to be ideologically driven, and they need to continue on that path to survive as an Islamic republic. तो देखते हैं और वो जो ज्यादा important चीज है कि even if he was assassinated earlier this morning or last morning, that is, that didn't deter the regime from carrying out all that they have carried out since yesterday. So that also shows कि और एक interesting बात है कि the only thing that was stopping Iran from developing nukes all these years was the man they just have assassinated or martyred. Because he had a fatwa against this, and IRGC के जो hardliners थे, they always said that this is going to be very bad for us. So let's see how this ends up, but it's more likely कि कैसे कहते हैं, the regime will survive. The regime will survive. Yes, it will have some repercussions, but वही बात है कि even when something like someone like Yahya Sinwar was assassinated, and the people thought that Hamas will collapse immediately, and that will be end of Hamas. Hamas didn't, and IRGC or Islamic Republic is not as a small group as Hamas. So let's see how this plays out, but things are going to go only bad from here. There is no this is now the how do you say end game, and the reason for that is because now Iran has nothing to lose, and a lot of people might not realize this, but this guy was like the leader of 20% of the, like, give or take, a lot of the Muslim population. Yeah. I think they have opened gateways to something worse than ISIS now. This is not going to. Yeah, I mean, आगे जाके देखा जाएगा कि क्या होता है अगर अमेरिका और इजराइल अगर वो फाइट कंटिन्यू रखते हैं, राइट, तो फिर तो कुछ और ही मामला होगा, फिर तो हालात किसी और ही तरफ जाएंगे. एंड या यू राइट, आईसिस वगैरह को हम सब भूल जाने हैं हमने यार. लेकिन देखा जाएगा, आगे जाके देखा जाएगा, मे बी लाइक आई मीन इट्स आल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स अ स्मॉल पॉसिबिलिटी, बट इट्स आल्सो पॉसिबिलिटी के यू नो कोई डे एस्केलेशन हो जाए, but it's a very small possibility क्योंकि I don't think so. I think. Yeah. Do you think America would de-escalate if their president was assassinated? No, like the situation is a bit different. For example, I think the reason why de-escalation नहीं होगी क्योंकि अब ईरान में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है. देखो, फॉर एग्जांपल कुछ ग्रुप्स हैं जो खामनेई के अपने मतलब लाइक वेरी लॉयल टू खामनेई हिमसेल्फ, राइट, उनके लिए एक बहुत ही लाइक बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ है, राइट, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लाइक पर्सनल चीज़ है. बाकी कुछ होंगे सियासतदान वगैरह जो चाहते हैं कि मतलब एक मडूदो वाली सिचुएशन हो जाए जहाँ पे मतलब cut a deal and kind of get on the other path. लेकिन जो हालात है, जो अभी हालात है, I doubt it very much कि इससे कोई खैर निकलेगी. लेकिन उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाल्लाह से कोई खैर निकले. और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो ये, अगर ईरानी सोसाइटी इंटरनली कोलैप्स होती है तो उसके रिपरकशंस तो मतलब लाइक 50 साल तक उसके लाइक आई मीन इराक वगैरह को देख लो, इराक और सीरिया वगैरह को देख लो, अभी तक वो भी कंटेन नहीं हो रहा. ओके, कितना वक्त हो गया. दिस इज जस्ट गोना बी कंप्लीटली जस्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल, लाइक दिस इज जस्ट गोना बी अ डिफरेंट स्केल ऑफ लाइक destruction. This is going to be very bad, man, especially on our. By the way, I'm really like, I'm not surprised, but I am kind of disappointed that like this happened, because
वो 12 डे वॉर में इतनी assassinations हुई Iranian like top leadership की. So the expectation was that like Iranians would be much more prepared this time, right? Yeah. I don't know, man. लेकिन खैर खामना साहब ने एक जिंदगी गुजारी, right? Is this the end of supreme leadership, democracy in Iran? अल्लाह आलम. तो खीर भाई जो नजर आ रहा है वो यही है कि मेरे ख्याल में जो होगा वो यही है कि इट डिपेंड्स ऑन के लीडरशिप की जो वैक्यूम है उसमें कौन स्टेप इन करता है. जैसे कामरान ने कहा अगर इसका बेटा भी जिंदा है, ठीक है, तो फिर तो मोस्ट लाइकली वही क्विकली स्टेप इन करेगा. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, फॉर एग्जांपल जो पार्टियां वगैरह है, जो वो लोग हैं, कि उनका रिएक्शन किस तरह का होगा, या वो क्या कौन सा रिएक्शन देंगे. It's too way too early to see कि ओके क्या होगा. मेरे ख्याल में रिजीम कोलैप्स नहीं करेगी. मेरे ख्याल में अगर रिजीम कोलैप्स करती है तो ईरान कोलैप्स करेगा. हाँ, like exactly. By the way, there's no scenario जहाँ पे रिजीम कोलैप्स करती है और ईरान इंटैक्ट as a continuous society रहता है. No, it's gonna be छावनियां बनेंगी, सिविल वॉर होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा. Like either the regime continues in some way, shape or form, या फिर a complete like it's gonna be a complete civil war. but Right. if let's take it from this perspective, right? कि if there is कैसे कहते हैं no regime collapse, ठीक है, and there is an element of कैसे कहते हैं liberalization of economy, do you think the Islamic Republic, the Islamic Mhm. revolution can continue then? That would be the end of कैसे कहते हैं the Islamic, because you have to understand that this is an ideological state. They cannot कैसे कहते हैं shake hands with Israel or become friendly with यार Iran. मेरे ख्याल में अगर कोई भी सिनेरियो है जहाँ पे like you have a kind of continuation slash change at the same time, वो यही होगा कि तुम्हारे पास एक स्लो प्रोसेस है. लेकिन हालात इतने खराब है कि वो स्लो प्रोसेस मुझे होते हुए दिखता नहीं है. like And like तुम्हें also, सराउंडिंग सिचुएशन. also, I think कैसे कहते हैं Iran burned all its bridges today. To be very honest with Yeah, and also like you have to also look at Israel. Like Israel is hell-bent. like completely gone mad, right? Huh, and the only way, to be very honest, if we take that Israel question, right, the only way to continue, no, to end that madness of Israel is to become as mad as Israel. Yeah, There is, basically, yeah. huh. And I think कैसे कहते हैं Israel वो managed to assassinate or martyr कैसे कहते हैं Ayatollah Khamenei very early on, which is why Iran did the attacks that it did. Because Yeah. other than that, largely you have seen that Iran has been very cautious about Patient. escalating. I think now they have decided that the bridges are going to be burnt, and I think the reason why they have confirmed his death is because they have decided who's going to take the reign in. And I think it's possible. I think I discussed this just a bit earlier as well. The people in the Revolutionary Guard were always against this particular notion of not building the bombs. Mhm. They always thought that we needed to build bombs. So it is probably likely that they might have try to get the bomb as well now. Because he was the मैं only ये कह one. रहा हूँ, बाय द वे मैं कल ही किसी से बात कर रहा था. मैंने कहा कि इमाम खुमैनी साहब का अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के लिए आसानी करे. उनकी सबसे बड़ा जो मेरे जहन में उनका ब्लंडर था वो उनका फतवा था न्यूज़ के बारे में. I truly believe that. And Khamenei Yes. साहब का भी I think it's the same thing. Okay. वो फतवा मतलब I totally understand, कहाँ से वो आ रहे हैं, what's the like in an Islamic worldview, nukes are just a complete no. Okay, it's a no-go zone. और बहुत से उलमा like उनके उस जज्बात को समझते थे. But it's just that like जो particular situation में हम पड़े हुए हैं ना, it's a like दुनिया जहाँ पे है, you don't have many options. And हमारे उसूल और फिक्र में तुम्हारे पास है एक बहुत सॉलिड आर्गुमेंट कि तुम्हारे पास होना चाहिए. Like तो मेरे ख्याल में उनसे like this is why I don't like philosopher kings. Philosopher kings का यही मसला होता है कि they're too much into they're too into philosophy. Like they're not too much into kingship. Like because if you're too much into kingship, then you're not a good philosopher king. और
फलसफी दुनिया में तो कोई भी मतलब बंदा कह सकता है कि it doesn't make any sense to have, you know, nukes, to create nukes and do that kind of stuff. लेकिन जब हकीकी दुनिया में तुम आते हो, अगर इनके पास डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर आर्सेनल होता, तो ये जो आज हो रहा है, ये सारा ना हो रहा होता. No way, right? Yeah, I tweeted about this and I said, okay, Iran's biggest mistake was to accept multilateral diplomacy in a unipolar world. Mm-hmm. They decided to rely on the diplomatic channels of Russia, of China, and etc., etc. Yeah. And in a unipolar world, right, to make sense of that, however you want to. But ultimately, that was their this was the downfall. Yeah. Let's hear what's happening. And regional powers have reacted to the joint military operation on Iran. Spanish Prime Minister Pedro Sánchez says his government rejects the military actions against Iran. The EU. Oh my God. At the time, I only thought that executive MBAs were the Situation must be returned to the path of political and diplomatic settlement. The Chinese Foreign Ministry has called for an immediate stop of the military actions and resumptions of dialogue and negotiation and efforts to uphold peace and stability in the Middle East. Mike Hanna joins us now from Washington, D.C. Mike, we'll get into the internal politics in a minute, but very strong words there coming from the international community. Donald Trump's, the administration has got to be taking those seriously. Yes, perhaps they are up to a point, but President Trump is absolutely insistent that this action being carried out in cooperation with Israel is for the good of the United States. He insists that it is to protect U.S. sovereignty, but also he says to protect the wider world, which has faced actions from Iran. So basically, Donald Trump will remain, I believe, unapologetic about this, despite the international criticism that he's getting. Sorry, Mike. I want to talk to you about the internal politics here as well. Now, it splits into two, doesn't it? You've got the Congress, who have been critical on both sides of the aisle, but, you know, the Republicans generally backing Donald Trump. And then you've got his base, the MAGA base, who has come out and absolutely criticized him for saying this is not what we signed up for. So he's got this internal pressure as well. But if he gets the success out of this, does that go away? Well, that's an excellent question. There is certainly some in MAGA who are deeply opposed to this operation. They believe that it is not in U.S. interest, which is something that President Trump said would be the centerpiece of his second term. He said it during the campaign. He made it clear since he's been in office for the second time as well that the U.S. should not get into outside wars because it's not necessarily in American interest. Some of his members of his MAGA movement are reminding him of this and are deeply upset about the fact that this operation has gone ahead. There's upset too in Congress, where particularly Democrats say that they received no news of the impending attack, that they have not been briefed on it, and that in the end it is Congress that has the power to declare war, not the president, not the executive. So there is that kind of anger within the United States domestically from his traditional supporters in MAGA, but also from some members of Congress who, interestingly enough, do include a couple of Republicans who've expressed concern about President Trump's unilateral decision to take this action without the approval or indeed the knowledge of Congress. Mike, stay there. We're going to come back to you in just a few minutes, but you are watching our continuing coverage of the joint Israeli and US strikes on Iran. I'm Imran Khan. In the last hour, Iranian state media has confirmed the death of the country's supreme leader, Ali Khamenei, in those attacks. 40 days of public mourning has been declared. Khamenei's daughter, grandchild, and 2 other family members were also killed in those strikes. The announcement follows a joint US and Israeli aerial bombardment targeting Iranian military and government sites. Iranian media have reported more explosions in the capital, Tehran. Iran retaliated with missile and drone strikes on Israel and US military bases in the region. In a moment, we'll be getting the latest from Tehran on the announcement of the supreme leader's death. But first,
Victoria Gately takes a look back at the life of Ayatollah Ali Khamenei. Born into a clerical family, Ali Khamenei studied at the religious seminary in Qom under the most prominent Shia scholars of the day, including Ruhollah Khomeini, who would later be the leader of the Iranian Revolution. Influenced by Khomeini's revolutionary ideas, Khamenei actively participated in anti-monarchy protests starting from 1963. He became a leading figure in establishing a new Iran after the monarchy was deposed in 1979. When the Iran-Iraq War broke out in 1980, the young Islamic Republic was struggling to establish itself both domestically and internationally. In 1981, Khamenei, a fiery orator in support of Khomeini, won the presidency. Throughout the 8-year war with Iraq, he frequently visited the front lines, earning the loyalty of the Revolutionary Guards. Iran was internationally isolated and economically devastated when Ayatollah Khomeini died in 1989. Hashemi Rafsanjani, one of the Islamic Republic's founding fathers, urged the Assembly of Experts to appoint Khamenei as the new supreme leader. I told Mr. Hashemi Rafsanjani that I would not accept this. I believe I do not deserve this position. Perhaps you and I know this. This would be symbolic leadership, not real leadership. But his leadership has been anything but symbolic. In the early 1990s, Khamenei focused on reviving Iran's economy. Iran began to reclaim a broader regional role after American military intervention in Iraq in 1991. This significantly weakened Iran's arch-enemy, Iraq's President Saddam Hussein. In 2003, the United States invaded Iraq again and deposed Saddam Hussein, giving Iran the opportunity to establish allied groups in Iraq. When the Arab Spring erupted in 2010, Iran supported Syrian President Bashar al-Assad's military suppression of the opposition, and its influence expanded in Syria, Iraq, Lebanon, and Yemen, which Iran refers to as the axis of resistance. At home, Khamenei favored conservative Afnan, presidents throughout his why don't you tenure. make a like Twitter account, or let me share it. There's like a lot of things that are going on. Yeah, let me stop sharing. You share. There is this Al Qaeda is siding with Israel in Iran. I don't know that Twitter is also like cesspool of what you call misinformation. So there is that. Yeah, of course. By the way, we're gonna wrap this up in like a few minutes, okay? Yeah, chalo kaise the we should. Let's wrap it up in like 2 minutes. Then but we should go live at a more reasonable hour rather than after. Of course, yeah. But So what time is maybe यही सोच रहा था. I was like, dude, no one's awake at this time. that's fine, man. No worries. That's fine. By Anyway, the way, at least we have figured out how to do a live. Do you remember the yeah, last yeah, time? this is a big achievement, yeah. You remember the last time we did try to do a live? That It was was horrible, dude. horrendous. Yeah, horrendous. We This one's just- good. This is good. This is nice. Like, it's fine. Honest, people always do. I mean, this is gonna be very interesting, very interesting, and sad. Yeah, essentially, कैसे थे मैंने जो Talat Hussain essentially said the same thing that I said, which is if Ayatollah Khamenei is killed, but nothing changes in Iran and its missile continue to fly, it will be the ultimate failure of this illegitimate attack. If he resurfaces, that would be the double disaster. If he is replaced by a hardliner, that would defeat the declared purpose of this assault. The real goal is to balkanize Iran and make a Libya out of it. But that would involve ground assault. Yes, without ground forces, this is not going to happen. That's the biggest question, though, right? That's the biggest question, क्योंकि अगर तुम अमेरिका की तरफ से भी देखो, तुम वो देखो, what's his name, Trump, right? Trump को नहीं पसंद कि वो मामलात को लंबा खींचे, ठीक है? और उसको ये भी पता है कि वो मतलब एक उसकी जो बेस है वो उसको पसंद नहीं करती, इस मामले को पसंद नहीं कर रही वो, especially ईरान में, because you know Iran is like too far away from home, it's too close to Iraq, you know, इराक की मेमोरीज अभी भी लोगों के जहन में है. And I think अगर मामला एक हफ्ते से ज़्यादा बढ़ता है, स्पेशली यू नो अगर हालात ख़राब होते हैं, फॉर एग्जांपल यू नो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से और इन सब की वजह से जब हालात और बिगड़ते हैं, तो आई थिंक द रिएक्शन इज़ गोना बी क्वाइट फियर्स, नॉट इवन फॉर ईरान, लाइक नो वन केयर्स अबाउट ईरान, ओके, बट
just because of like personal like domestic मामलात. तो I think Trump यही कोशिश करेगा कि मामलात को जल्दी से like निपटा के खत्म करें, right? By the way, somebody tweeted this: Russia never hit a school full of children in over 3 years of war in Ukraine. Israel and US did it on the first day. Of course, yeah. I mean, it's, like targeted attacks, as they say, precision attacks. इनके पास काफी precision attacks, equipment है, और इसलिए तो वो बिल्कुल precisely जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे हमला करते हैं, right? I mean, like the thing is, even Khamenei साहब को मारना, right? Because it's a big move. तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनका वही है, like I think Trump यही चाहता है कि जल्दी से मामलात को निपटा ले, जल्दी से मामलात को खत्म करें. Yeah, but वही जो मैंने तुम्हें बात की ना earlier कि this is a miscalculation because Iran does not run on कैसे कहते हैं individuals. यार Western mind में ना Western mind is obsessed with the individual. Yeah. They really think things revolve around everywhere else because in their what you call countries things revolve around individuals, right? Yeah. So they really think it's the same everywhere else as well. You are a bit younger than me, but so I'll take the क्या कहते हैं, I'll do the ageism on myself over here. So when Castro was alive, right, they used to tell everybody कि कैसे कहते हैं, it's just this brutal dictator. Once he falls, the Cuba will fall. Castro died in 2011. America has sanctioned it since 1959. Cuba is still here. Yeah. No, देखो like especially ईरान का मामला तो बिल्कुल ही different है. ईरान के मतलब इनको पता नहीं कि ईरान like Iran is not like South America. Okay. हाँ, exactly. Iran is not Portugal. Iran की किस कहते हैं जो ideology the यार नहीं मतलब and recently ना आज या कल में किसी कैसे कहते हैं one of the कैसे कहते हैं individual from the कैसे कहते हैं ministry official diplomat he was talking about this. He said कि what you have essentially done is he was like how do you see this proceeding? He was like we want to thank you because there was a lot of people in our younger generation who hadn't seen the Iran-Iraq war, who thought that we were all like all these years lying to them when we said that America will come and attack you just because it can. And he said that the next generation will be more worse than this. Yeah. And essentially that is what's going to happen here. America and Israel have a special tendency to create enemies worse than the last time. Take the example of Lebanon. Lebanon में ना and we'll wrap up after this. Lebanon में होता ये है कि 1982 में the Israelis are celebrating. They cannot कैसे कहते हैं like contain their joy when PLO is evacuated from southern Lebanon. Yeah. साल के अंदर जो है ना Hezbollah carries out one of the greatest कैसे कहते humiliation of Americans. Yeah. In a single day, they assassinate. What would be a good term for the infidels to say that the infidels were in a single day, 243 infidel soldiers were sent down the hell. By the way, and that is one of the biggest losses for and because they were all not just soldiers, they were Marines. Yeah. No, dude, अमेरिका के लिए 10 बंदे मर जाए तो अमेरिका में मतलब एक मातम आ जाता है. ये तो हमारा खून सस्ता है. हाँ. और यार हमारे यहाँ तो like people don't even grapple with the idea कि 10 लोग मर गए. Listen to me, हमारे यहाँ 10,000 से कम हो तो मतलब we are not even like discussion is not okay. This is not worth discussing. It's not breaking news. Okay? But just really think about it. That's like such a bizarre world to live in. And this has been our reality for at least since Gulf War. Dude, इस चीज से अगर कुछ भी साबित हुआ है ना तो बस ये बात साबित हुई है. Okay? हम उनके लिए कभी ना कुछ है न थे न होंगे. अमन की जो ख्वाहिश है, अमन की आशा वो कभी न थी न है न होगी. Okay? अमन का तरीका एक ही है. Okay? Like as Tony Stark said, what is peace? Peace is having a bigger gun than your opponent. Okay? That's basically what they understand. अगर आज ईरान के पास एक declared nuclear arsenal होता, right? वो यार वो एक meme थी ना. By the way, someday we'll just like
have like a lot of memes on this. A meme, Like, yeah, meme sash, yeah. yeah, me too. there was like this meme. He was like, we want to kaise kehte hain, invade Iran. He was like, well, no, we want to free Iran. He was like, why? They might have nukes, and somebody says, okay, but Korea has, but then why not attack kaise kehte hain, North Korea? He was like, because they have nukes. They have nukes, dude. Shut up. Once again, मुझे कोई कॉल आ रही है। जानी मैं इसको रैप अप करते हैं, ठीक है? चलो चलो इंशाल्लाह कैसे ओके, थैंक यू यहाँ पे एवरीबॉडी फॉर इफ्तारी का हाँ। टाइम शुरू हो चुका है। 5 मिनट हो गए, ठीक है? तो इफ्तारी का टाइम है। इमाम खामने साहब के लिए दुआ करते हैं। He had a good run, okay? Dying in your mid-80s. One of the honestly one of the One of the finest finest. one of the finest that we had in Muslim world for the last 50-60 years. और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि जो उसके गुनाह है, जो उससे गलतियाँ हुई है, वो सब उनकी मग़फ़िरत कर दें, और जो उनके बाद जो चीज़ें बची है उनके लिए आसानी कर दे, और जो लोग हैं उनके लिए आसानी कर दें। जो ज़ालिमीन हैं उनको अल्लाह अपने ही तलवार से काट दें, और जो मज़लूमीन हैं उनकी अल्लाह हिफाजत कर दें, और जो खाना मनाई साहब के ख़ानदान वाले हैं अल्लाह उनको आसानी दे और उनके लिए आसानी करें, और जो बाकी लोग खामनाए साहब के साथ शहीद हुए हैं अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस अता करें, और जो भी उनकी गलतियां हैं, जो भी उनसे कोताहियाँ हुई हैं, वो अल्लाह सब उनके लिए माफ़ कर दें, और अल्लाह हम सबको अपने अमन अमान में रखें। और आखिरी में वही बात है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही से हैं और अल्लाह के लिए हमारी वापसी हैं। तो हम सब ने जाना है और सबकी यही हकीकत है। और जैसे अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में कहता है कि जो लोग शहीद हुए हैं तो उनके बारे में ये ना सोचो कि वो मर चुके हैं, बल्कि वो अल्लाह के पास है और उनको अल्लाह के ख़जानों से रिज़्क़ मिल रहा है, ओके? आइल वो ज़िंदा है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा किस्सा करता हूँ। जब ग़ज़वाए उहद थी ना, जहाँ पे, हाँ, ग़ज़वाए उहद, जब कुफ़ार वापस आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब पे हमला करने के लिए, और जब मुसलमान मरने लगते हैं, मुसलमान पे जो हमला भारी हो जाता है, तो वो पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। जब वो पहाड़ पे चलते हैं तो अबू सुफियान वगैरह वो सब जो होते हैं तो वो नारे लगाते हैं और वो कहते हैं कि हमने तुम लोगों को हरा दिया, हमने तुम लोगों को पछाड़ दिया। सो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक जवाब है, जो मुसलमानों का फ़लसफ़ा है ना ज़िंदगी के बारे में, उसको बिल्कुल समराइज़ करता है, राइट? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसको जवाब में नारा लगाते हैं कि फ़र्क ये है कि जो तुम्हारे मुर्दा हैं वो जहन्नम में है, और जो हमारे मुर्दा है वो अल्लाह के पास है, राइट? सो दैट इज़ द डिफरेंस। ऑफ कोर्स हमारे लोग मरते हैं, हमारे शुहदा, लेकिन हमारे शुहदा इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के पास है, राइट? हमारे शुहदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास है, हमारे शुहदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, राइट? हमारे शुहदा अल्लाह के पास है, और जो उनके शुहदा है तो वो एप्स्टीन के पास है और ड्रैकुला के पास है, और इन जहन्नम रसीद लोगों के पास है। तो अल्लाह खामना साहब को जन्नत दे और उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर दे, और उनकी जो सारी अच्छाइयाँ थी उनको ऊपर उनको जज़ा दें। और इंशाल्लाह इसको रैप अप करते हैं, और आमीन आमीन। Amin. So thank you Afnan and thank you everybody for watching. Yeah. Inshallah we'll be back soon. Assalamu alaikum.